The obligations of the Sultan are 7. Number 1, the minting of the dinar and the dirham. It is an obligation of the government to mint the dinar and the dirham. And then to let the people choose the dinar, the dirham, or anything else they choose. This is Islamic law. The dollar is not part of the Islamic law. The dollar is not part of our Sharia. And those that have accepted the role of the US dollar in our economies, shame on them. All the central banks in the world, without exception, all the central banks in the world are part of what is written here, the New World Order. After World War II, when the famous decolonization took place, they gave independence to all the little countries. So they gave independence to Malaysia and to India, and later on you got Pakistan. But all the countries, without exception, they were given one legal condition, and the condition to become independent was to have a constitution. All the constitutions in the world, they are the same, identical. They are identical. All the constitutions in the world are identical. Identical on 3 accounts. First of all, you have a central bank. Oh, you want to become independent. If you want to become independent, people of Pakistan, you have to have a central bank. Second, you have to have paper money, not this gold and silver. You must have paper money. And all these small countries, they jump on producing this new paper for their people, saying, look, we are free, we have a rupee of the Bank of Pakistan. And they thought they were winning the independence, and they were gaining only their slavery. And the third thing, the national debt. You don't know what the national debt is?
The people of Greece did not know what the national debt was up until 3 months ago. 3 महीने पहले तक यूनान के लोगों को पता ही नहीं था कि कौन पर भी करना होता है, वो तो सिर्फ आपत्ति करने को जाते हैं। The national debt is that you, whether you like it or not, you owe money to a third party. आप एक कॉपी करते हैं किसी से कि आप ना चाहें या चाहें, आप मकरूज होते चले जाते हैं थर्ड पार्टी। When a boy or a girl is born in Lahore today, he comes to the world with a debt upon his shoulders. जो एक बच्चा लाहौर शहर में आज 10 साल की पैदा होता है, वो अपने कंधों पर एक कर्ज का बोझ लेकर पैदा होता है। This is an insanity, but it's fundamental to capitalism. Without national debt, you cannot have capitalism. इसलिए कि आप सरमायादाराना निजाम कायम ही नहीं कर सकते कि जब पूरी कौम को कर्ज के अंदर ना देखा जाए। Capitalism is embedded in your constitution. कैपिटलिज्म सरमायादाराना निजाम आपके आईन के अंदर मुस्तहकम है। So they told you you had independence in 1947. You didn't have independence. You don't have independence. ये बात कि आप 14 अगस्त 1947 आजाद हो गए थे, सबको आजादी नहीं मिली, बल्कि और बात है। You are not independent. आप आजाद नहीं हो, You are dependent. आप एक दूसरे पर मजबूर हो, गुलाम हो। You will become independent the day you get rid of your central bank. आप उस दिन आजाद होंगे। You will be independent. You will be independent the day there is no Riba in Pakistan. आप उस दिन आजाद होंगे जिस दिन आप सेंट्रल बैंक से आजाद होंगे। But for as long as you have banks in the streets of Islamabad and Karachi and Lahore, you are not independent. आप उस दिन आजाद होंगे कि जब आप सूद से आजाद होंगे। आप कराची की सड़कों में, लाहौर की सड़कों में कितना आजादाना घूमे, लेकिन आप आजाद नहीं। Riba is slavery. सूद एक गुलामी, Riba enslaves people. ये लोगों को गुलाम बनाती है। Riba is the worst crime in mankind. रिबा या सूद इंसानियत का सबसे बदतरीन जुर्म है। In Islam, there is only one crime worse than riba, and that is shirk. इस्लाम के अंदर एक ही जुर्म है जो नकाबे माफी है, और वो है शिर्क। Rasul sallallahu alaihi wasallam said, riba is 70 times worse than incest. Riba is 70 times worse than incest. Intercourse with a mother. I mean, what can it be worse, 70 times worse than incest? What can it be such thing? आप खुद सोचें कि सूद खाने वाला ऐसा है कि 70 गुना मां के बिना से भी ज्यादा गुनाहगार, मां का गुनाह से भी गुनाहगार। That is every bank in Pakistan. But above all of them, the Central Bank of Pakistan. लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के जरिए से होता है। This man is an ignorant kafir. ये शब्द एक He's an ignorant kafir. ignorant कैथलिक है। Kafir, he's a kafir, he's an ignorant kafir. Kafir, kufar. ये आप can you He's an ignorant fellow. He doesn't know anything about Islam. इसको इस्लाम का बिल्कुल नहीं पता, वो एक बिल्कुल जाहिल सा काफिर है। But he is saying the Central Bank of the United States have to be abolished. लेकिन वो कहता है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है तो खत्म हो जाना चाहिए।
Now, how many times have you heard that the Central Bank of Pakistan has to be abolished? आपने कभी इस पाकिस्तान के अंदर एक शब्द भी कहते सुना कभी कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो खत्म होना चाहिए? No, we have taken it for granted. इसलिए आप तो समझते हैं कि कहते हैं चलता है चलता रहना चाहिए. And so is the rupee. इसी तरह रुपया. Don't you complain? You complain in every newspaper. Inflation is crazy. This is outrageous. We are being robbed. You know the problem is there. आप रोज अखबार पढ़ते हैं कि प्राकृतिक हो रहा है, पूरा कीमतें महंगी हो रही हैं. Have you heard any alim saying we have to get rid of the rupee? क्या कभी आपने सोचा था इस रुपये से जो रोज हमें इतना लूटता है, हम इससे निजात हासिल करें? How is it that this is the first gold dinar many of you have ever seen? It's the first time. And I want you to come and touch it. Come and see it for yourselves. Keep it in your hand. For these will become the currency of the Muslims. For certain. ये अगर आपकी currency बन जाती है और इसके द्वारा आप लेन-देन करते हैं तो फिर आप देखिएगा. Now you know why they say I am more dangerous than Usama bin Laden. अब आपको समझ आएगी कि क्यों अमेरिका का दर्द कहता है कि मैं उसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक हूं. They wrote, the atomic bomb of the Muslims is not the one of Pakistan. The atomic bomb of the Muslims is the gold dinar. मुसलमानों का एटम बम वो नहीं है असल में जो पाकिस्तान के पास है, बल्कि मुसलमानों का एटम बम ये गोल्ड दिनार. Because this is the key. This is the key to finish with riba. ये एक चाबी है जिससे आप सूद से निजात हासिल कर सकते हैं. And finishing riba, the battle against riba, is the most important political event of the Muslims in the 21st century. इसलिए कि सूद के खिलाफ जंग सबसे अहम तरीन वाक़या है जो होगा इस सरजमीन पर. It precedes, it comes before any other issue. ये हर उस मामले से ज़्यादा अहम है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं. And to fight against capitalism cannot be done being against capitalism alone. कैपिटलिज्म सरमायादाराना नाम से जंग अकेले सरमायादाराना नाम से जंग करने से नहीं जीती जा सकती. For you cannot create a successful movement based on I am against something. But it must be that we are founded upon what we are in favor of. आप किसी चीज के बारे में मूवमेंट लाते हुए इस बात पे आगे नहीं बढ़ सकते कि मैं फलां चीज के खिलाफ हूं, बल्कि आपको साथ ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज के हक में हूं. If we want, and we want to find a solution, हम एक फल की तलाश करते हैं. it is not enough to know what is haram. We need to know what is halal. इस बात जरूरी नहीं कि आप ये जाने कि क्या हराम है, बल्कि उसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि हलाल क्या है. What is halal? हलाल क्या है? What is our model? This is like a doctor who is assessing somebody who is ill. But this doctor does not know what is the meaning of health. अगर आप एक डॉक्टर का दावा लगाइए तो किसी चीज का इलाज करने जाता है तो उसको सेहत का मायने ही ना देखो. If you do not understand health, you cannot understand illness. आपको अगर आपको सेहत का नहीं अंदाजा या आपको सेहत के मायने नहीं आते तो आपको बीमारी का भी अंदाजा नहीं होता. So before we say
we want to get rid of the banks, we must know what is the right way of doing the things. इसलिए इसके ऊपर ये कहते हैं कि हम नए से ज्यादा करना करनी है, हमें पता होना चाहिए उसके लिए बेहतर रास्ता काम करने ज्यादा करेगा. And what is the answer to that? The answer is mu'amalat. और इसका जवाब क्या है? और उसका जवाब है मुआमलात. This is the third word I want you to remember today. The first is dinar, the second is dirham, the third is mu'amalat. मैंने ये तीसरा लफ्ज है जो लिखा है, इसके बारे में कुछ पूछा था. पहला है दिरहम, दूसरा है दिनार, तीसरा है मामलात. Not Islamic economics. We don't have Islamic economics. What we have is mu'amalat. हम इस्लामी माशियत जो है उसकी बात नहीं करते, हम मामलात की बात करते हैं. Like there is no Islamic banks. जिस तरह इस्लामी बैंक नहीं होती, इस तरह इस्लामी मईशत नहीं होती, इस्लाम में मामलात होते हैं. Islamic banks are haram, haram, haram. इस्लामिक बैंक हराम है, हराम है, हराम है. Not one haram, 3 harams. 3 हराम है. They have sold out Islamic law. उन्होंने इस्लामी दुनिया को बेच दिया. They have now Islamized the Dow Jones, the futures. They have Islamized the bonds. They have Islamized the whole of capitalism. उन्होंने तमाम तर चीजों को जो सूदी निजाम का निजाम उसको इस्लाम का लेबल लगा दिया. Because you cannot Islamize capitalism. It's impossible. You can only eliminate capitalism. ये कोई रास्ता नहीं कि आप किसी कैपिटलिज्म को इस्लामाइज करें, उसको कलमा तैयबा पढ़ाएं. So, some people in the 50s, many of them from Pakistan, started to say, bank, Islamic bank, insurance, Islamic insurance, stock exchange, Islamic stock exchange, inflation, Islamic inflation. पाकिस्तान में भी आपको 1950 से लेकर तक ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं ये बैंक है और ये इस्लामी बैंक है, ये इंश्योरेंस है, ये इस्लामी इंश्योरेंस है, ये स्टॉक एक्सचेंज है और ये इस्लामी स्टॉक एक्सचेंज है, और ये इफराज दर है और ये इस्लामी इफराज दर. This is an insanity. ये एक शर्मगिरी है. We have our own model. We do not need to Islamize capitalism. हमारा अपना एक तरीका मॉडल है. हमें किसी दूसरे को इस्लामाइज करने की या उसको इस्लाम के रंग में ढालने की जरूरत नहीं है. And this model is mu'amalat. And this model comes from Medina al-Munawwara. और ये मॉडल मदीना की सरजमीन से आया. Our model is the model of the Amal of the Ahl al-Medina. The Amal, Muamalat Amal of the people of Medina. The Amal. मॉडल मदीना के रहने वालों के दरमियान जिस तरह मामलात होते थे उस पर बुनियाद रखता है. This is where comes the dinar and the dirham. But the dinar and the dirham are not the most important institution of muamalat. ये कोई मुसलमान का एक परमानेंट मुस्तकिल का इंस्टीट्यूशन नहीं था, ना है. The most important institution of muamalat is the souk, the marketplace. मुसलमानों के मामलात में सबसे अहम चीज सूक यानी बाजार. When Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Medina, he made a mosque and a market. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो उन्होंने 2 चीजें बनाई. एक And he said, उसके साथ जायज का बाजार. he said, the sunnah of the market is like the sunnah of the masjid. It must be free for everybody to have access to. मस्जिद भी सुन्नत है और सूक यानी बाजार के लिए है, मतलब तिजारत के लिए कि ये हर एक के लिए इसके यहाँ आना है वो फ्री.
And the marketplaces in Islam, they have been for